students. Today we are discussing a very important topic of ecology, and that is aquatic ecosystem, and especially focusing on the topic of the zones of freshwater body. Freshwater body zones हम डिस्कस करेंगे. Like example we can take a lake or a pond. वाटर रिजर्वायर के हम इकोसिस्टम्स डिस्कस करने जा रहे हैं. सो स्टूडेंट्स, ये क्लियर होना चाहिए कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ वाटर बॉडीज़. वन इज़ फ्रेश वाटर and the other is marine water. Fresh water is available water for us which we can use in our daily life, and that is only 1% of whole the water on earth surface. तो अवेलेबल वाटर हमारे पास कौन कौन सा है? दैट इज़ lakes, ponds, rivers and any other except the sea water. Marine water is basically the sea water or the salty water. So this is usually not available for human use or daily life use. After this, now we are going to discuss the zones of fresh water. Fresh water body के हमारे पास usually 3 zone होते हैं. We can divide a fresh water body into 3 zones. The first one is littoral zone. अब हम हर एक के differences discuss करेंगे. The other one is limnatic zone. And the third one is profundal zone. Most of it we differentiate them on the basis of availability of light and oxygen or the penetration of light and oxygen. तो littoral zone shallow water zone होता है. First of all I would like to describe it with the help of a diagram. तो ये कुछ इस तरह से बनता है. अब जो shallow water zone है, like just near the bank of a river or the bank of a pond, stream or a lake, तो ये हमारे पास littoral zone है. Then a little deeper and extended zone is this one. This is littoral zone. This one is limnatic zone, and the deeper one, this is profundal zone. So as you can see, the littoral zone is near to the edge or the bank of water body, and it is shallow and exposed. तो यहाँ पर less deep water होता है, यहाँ पर light penetration best होती है, and oxygen availability obviously it is interacting with the atmosphere, तो यहाँ पे most है. littoral zone के अंदर because it is receiving most of the oxygen and light, so यहाँ पे photosynthetic organisms like plants वगैरह बहुत ज़्यादा होंगे. तो यहाँ पे algae होगा, plants होंगे, grasses होंगे, submerged plants होंगे like lilies वगैरह, जो कि rooted plants होते हैं mostly. Then limnatic zone is an open zone and it is receiving comparatively less amount of light and oxygen. तो यहाँ पर भी कुछ plants होंगे, and as you know the plants are producer of any ecosystem in the world. तो producers को प्रोड्यूस करने के लिए या फोटोसिंथेसिस के ज़रिए फूड प्रोड्यूस करने के लिए लाइट और ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन इज़ नेसेसरी एंड लाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. तो यहाँ पर लिम्नेटिक जोन भी ऑक्सीजन रिसीव कर रहा है और साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट भी रिसीव कर रहा है.
and the third one, profundal zone, as it is deeper than the other two, so it is receiving least light and the least oxygen. सो अब आपको लोकेशन के हिसाब से तो पता चल गया लिटोरल जोन कौन सा है, विच इज़ शैलो वाटर जोन नियर द एज और द बैंक ऑफ द रिवर, एंड द लिम्नेटिक जोन which is a little away from the edge or the bank of water body, and it is receiving lesser amount of oxygen and light. And the third one is profundal zone, which is receiving the least light and oxygen, and sometimes it is dark one. So as you know, photosynthesis के लिए जो plants हैं उनको लाइट की ज़रूरत है. सो जहाँ पे लाइट सबसे ज़्यादा होगी वहाँ पे प्लांट्स यानी प्रोड्यूसर्स सबसे ज़्यादा होंगे. देन जहाँ पे लाइट कंपैरेटिवली कम है वहाँ पे कम नंबर ऑफ़ प्रोड्यूसर्स होंगे तो उन पर फीड करने वाले कंज्यूमर्स भी होंगे. एंड देन एट द लास्ट प्रोफंडल जोन, तो यहाँ पर प्रोड्यूसर्स तो नहीं हैं बट सेकेंडरी कंज्यूमर्स होंगे. एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स एज यू नो दे आर फीडिंग अपॉन द प्राइमरी कंज्यूमर्स. And along with that, another thing which is not present in littoral and limnatic zone, profundal zone के अंदर decomposers भी होंगे as the fungi and other detritivores which are feeding upon the detritus. So I hope water zones आपको यहाँ पर clear हो गए होंगे. So let's have a very quick look on the ecosystem of a pond or a lake. So जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि यहाँ पर लिटोरल, लिम्नेटिक और प्रोफंडल जोन के अंदर किस तरह से विद द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट तमाम ट्रॉफिक लेवल्स मौजूद होंगे. सो प्रोड्यूसर्स देन प्राइमरी कंज्यूमर्स and at the end secondary consumers, and the last but not least decomposers. जब भी हम किसी इकोसिस्टम को डिस्कस करते हैं सो वी हैव टू टेल अबाउट ऑल दीज ट्रॉफिक लेवल्स. सो यहाँ पर जो भी कैटेगरीज हम कह रहे हैं प्रोड्यूसर्स वो सबसे ज़्यादा लिटोरल जोन में होंगे बिकॉज एज आई हैव मैंशन मैनी टाइम्स ये सबसे ज़्यादा लाइट भी ले रहा है और ऑक्सीजन भी ले रहा है, जो कि यहाँ पर पाए जाने वाले प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन के लिए दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, और डेफिनेटली एयर से कार्बन डाइऑक्साइड भी ले रहा है. एट द सेकंड नंबर लिम्नेटिक जोन के अंदर भी प्रोड्यूसर्स पाए जाएंगे. सो यहाँ पे अगर मैं आपको प्रोड्यूसर्स के नाम बताऊँ सो यू कैन नोटिस यहाँ पे प्रोड्यूसर एल्जी और वाटर लिलीज़ और इस तरह के ग्रासेस वगैरह प्लांट्स मैंने आपको बताए, जबकि लिम्नेटिक जोन में एल्जी ज़्यादा पाई जाएगी और टोटली सबमर्ज प्लांट्स पाए जाएंगे लाइक वाटर चेस्टनट एंड लाइक अदर दोज प्लांट्स. सो साथ ही साथ कंज्यूमर्स की जब हम बात करें तो इन छोटे प्लांट्स के ऊपर फीड करने वाले जूप्लांक्टन्स, छोटे छोटे क्रस्टेशियंस, प्रोटोजोन्स, वो सब प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे विच आर नोन एज हर्बीवोर्स विच आर डायरेक्टली फीडिंग अपॉन द प्रोड्यूसर्स. तो प्राइमरी कंज्यूमर या हर्बीवोर्स भी इन जोन्स के अंदर abundantly पाए जाते हैं. Then the secondary consumers which are feeding upon the primary consumers, now they are known as carnivores, and the carnivores they are feeding upon the protozoan and all other little living organisms or zooplankton in the water body. And secondary consumers which are then feeding upon these herbivores like big fishes and all those organisms, turtles, etc. So decomposers, as I have mentioned earlier, they are only present in the profundal zone जहाँ पर लाइट भी प्रेजेंट नहीं है और साथ ही साथ ऑक्सीजन भी बहुत कम अमाउंट में है. और ये डिकम्पोजर्स जितनी भी यहाँ से डेड मैटर आता है इन दोनों जोन से इसको रिसीव करता है, लाइक किसी फ़िश की डेड बॉडी, छोटे छोटे क्रस्टेशियंस की, किसी प्लांट की डेड बॉडी, उसको यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है डिकम्पोज़र और यहाँ पे इसको
डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर को डिके कर कर क्लियर आउट करता है. So this was all about the zones of freshwater body. So I hope you have understood this all clearly. Next lesson में we will discuss more about the ecology. So stay connected to the channel. चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने तमाम फ्रेंड्स से शेयर करें, and don't forget about the feedback. So I'm waiting for your feedback. See you in the next video. Allah Hafiz.